Okay, basically, चलो एक रिवीजन दे देता हूँ, क्विक रिवीजन फॉर द केस वी हैड डन लास्ट टाइम. सो बेसिकली इफ यू सी, हम लोगों ने पॉलीप्रोटिक एसिड की बात की थी. एंड पॉलीप्रोटिक एसिड में इफ यू सी, द फर्स्ट पॉइंट वाज इट विल बी आयनाइज्ड इन स्टेप वाइज मैनर, है ना. If it is ionized in a stepwise manner, and if each step is having reversibility, then each step will be achieving the equilibrium state. So each step will have some equilibrium constant. That was first point. तो इसी में हम लोगों ने कुछ points देखे थे. The first point was that in this case Ka1 will always be greater than equal to greater than much greater than K2 will be much greater than K3 and so on. ठीक है, that's one part. If they are simply adding the reaction and they are asking you overall K का value बताओ, that will be K1 into K2 into K3. But if they are relating the H plus and phosphate with this relation, this equation, then you can't say that H plus will be exactly equal to 3 times the concentration of phosphate. And that we have learned from the charge balance method also, है ना. इसके बाद third part was because K1 is much greater than K2, much greater than K3 and so on. That was one part. And the second part is the H plus coming from first step will be imposing common ion effect on the remaining steps. हर स्टेप बाकी दूसरे स्टेप पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाने वाला है, but the significant common ion effect will be imposed by the H plus from first step on the remaining steps. And that's why we can say that with the point number 2 and 3, we can say that H plus from the acid will be equal to H plus from the first step itself. Now it becomes a question of case number 3 where we were talking about कि वीक मोनोप्रोटिक एसिड है, तो फिर कैसे करेंगे. तो जहां K लिख रहे थे वहां K1 लिख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे, बस. दैट इज द ओनली डिफरेंस. सो व्हाट वी विल डू, we'll check under root K1 upon C if it is coming less than 0.1 or equal to 0.1. Then we say this one will be the value of alpha 1, and then H plus from acid will become under root K into C. And then we'll check if it is greater than 10 to minus 6, then we can directly calculate the pH from this H plus from acid. That was one part. After getting H plus from acid, if they are asking you anions का concentration, so in first step जितना H plus बन रहा था, that much was H2PO4 minus only, and we have assumed that the remaining steps का ionization will be almost negligible, and that's why we can say H plus will be equal to H2PO4 minus, है ना. Now if they're asking you second and third step, we'll write K equals Q, है ना. And K equals Q में H plus we have already got. बाकी आयंस में जैसे H2PO4 माइनस मिल चुका है, तो HPO4 2 माइनस मिल जाएगा. आफ्टर गेटिंग HPO4 2 माइनस, इफ दे आर आस्किंग यू फॉस्फेट, तो थर्ड स्टेप में यू अप्लाई K इक्वल्स Q, है ना. एंड देन यू विल बी गेटिंग PO4 3 माइनस. इज इट ओके? सिमिलरली जहां एसिड है वहां बेस कर दिया, तो जहां H प्लस है वहां OH माइनस आ जाएगा. उसके बाद वी हैड सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट सिंपली वन एसिड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, and that was H2S ka case. If you calculate the molarity, it was coming 0.1, that we called as C. And I told you we'll be simply taking under root K upon C, will check, and it was coming 0.1 cell less, and that's why H plus from acid will become under root K1 into C, and that is coming 10 raised to minus 4, which is more than 10 raised to minus 6. So that's why we are saying pH can be 4. Baki HS minus will be equal to H plus. OH minus is always KW by H plus. Sulfide के लिए will go to the second step, in which we'll be writing H plus into sulfide upon HS minus will be K2. We know K2, H plus HS minus are equal, so they will be cancelled out. So sulfide was 10 raised to minus 30. Second question was like हम लोगों ने जो केस 5 पढ़ा था, in which we were having weak acid and a strong acid, that was the case. तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था strong acid will be imposing common ion effect on the ionization of the weak acid. तो यहाँ पे बोलेंगे कि presence of HCl will impose the common ion effect on the even on the first step of ionization of H2CO3, and that's why that is also suppressed. So that's why what we are going to see, H plus total के लिए H plus from strong acid, वैसे तो प्लस H प्लस फ्रॉम वीक एसिड भी आता था, बट जैसा केस 1 में, केस 5 में we had checked this assumption, and after that we decided that whether assumption will be valid or not. तो मैंने बताया था शॉर्टकट में, अगर ये मेंस का क्वेश्चन है तो यू कैन डायरेक्टली टेक द assumption. They don't want you to solve quadratic equation in this case especially. So that's why mains है तो डायरेक्टली कर लेने का है, बट एडवांस है तो एक बार चेक करने का है. And after that, if I am getting the assumption valid, I'll be writing H plus from acid will be H plus from strong acid only. और वो 10 raised to minus 6 से ज्यादा है तो उसी को H plus total ले लिया, and then we can calculate the pH. बाकी concentration of ion HCl से HCl minus आएगा, it is not having any reversibility, so that's why जितना H plus आया था उतना ही Cl minus आएगा, and that was 0.2. Okay.
Now, if I'm talking about H2CO3 के ions का, so now even the first step will have reversibility and it will have common ion effect, and that's why I'll simply be writing whatever we were doing for second and third step. Now we'll be doing it for first step also, है ना? And while doing that, I'm getting H plus into HCO3 minus upon H2CO3 is equal to Ka1. In this part, we are saying even the first step ionization is almost negligible. And that's why H2CO3 जितना start में था उतना ही लिखा. And that much is 0.1, I think. And that's why we are getting HCO3 minus. After getting HCO3 minus, जैसा पिछली बार किया था second step के लिए, वैसा यहाँ भी कर दिया. Is it okay? So these were the questions. और last में मैंने एक question दे के छोड़ा था that if I'm considering the actual ionization of H2SO4, it is not reversible in both, it is not irreversible in both the steps, and that's why we need to consider the actual if they have given you the K of the second step. Okay, अगर नहीं दिया तो हम लोग जो करते थे वही करेंगे जो मैंने राइट साइड में यहाँ लिखा हुआ है. दिस वाज द पार्ट जो अभी तक हम लोग करते रहे. नाउ टुडे इफ आई हैव टू डू इट, आई हैव स्टार्टेड द, हाँ, ओके. सो इफ आई हैव, हाँ, इफ आई हैव टू सॉल्व इट, हाँ बोलो. आंसर एक बताओ. आई थिंक 1.85 जैसा आना चाहिए. हाँ सही है. Okay, good. So basically it says first step is not having reversibility. H2SO4 is giving you H plus HSO4 minus. And in that we are knowing that we have got 0.01, तो ये 0.01 मिलेगा, ये भी 0.01 मिलेगा. It doesn't have any reversibility. But now this HSO4 minus aqueous, which is giving you another H plus, will have reversibility. And that's why we need to assume partial consumption or partial conversion of HSO4 minus into H plus and SO4 2 minus. And its K value is given as 10 raised to minus 2. Sometimes they'll be writing K2. So they are saying that second step is reversible and K value is this much. Okay, so even if they are writing K2, they are giving you the K of the second step. So now in that, we'll say before ionization, if it was 0.01, this was already 0.01 from the first step, and this was 0, then we'll say at equilibrium. यहाँ पर if they are not asking about alpha ना, तो directly minus x भी कर सकते हैं, और you can write 0.01 into 1 minus alpha. That is also okay. So यहाँ पे if I don't, देखो ना यहाँ सिर्फ pH पूछ रहा है, तो अल्फा की जरूरत नहीं है. We can calculate that. But right now I'm saying कि इसका x consume हुआ तो इसका x form होगा, इसका भी x form होगा, and we have got this. Is it okay? If it is consumed by x, this will be produced by x. This will also be produced by x. And that's why we'll write this is the final situation. And at final situation, we can write K equals Q. So we'll write at equilibrium H plus into sulfate upon HSO4 minus is equal to K ka value. And after that, the equation is 0.01 plus x into x upon 0.01 minus x, and that will become equal to 10 raised to minus 2. Now, if you solve it, we are getting x square plus, इसको 10 raised to minus 2 ही लिख देता हूँ, this much is equal to minus 10 raised to minus 2x plus 10 raised to minus 4. So we are getting x square plus 2 into 10 raised to minus 2x, इसको 10 raised to minus 4 मत लिख देना. And then we have to write minus 10 raised to minus 4, that is 0. And now we have a quadratic. Now why I have directly moved to quadratic, because we know that ये value जो है ना, इसका k upon c करके देखो ना, we are getting 1. So under root k upon c, तो यहीं पे 1 आ रहा है, तो we can't take that assumption that x is negligible. We can't ignore it. So यहाँ पे if you solve the quadratic, we are getting x equals minus 2 into 10 raised to minus 2, and then we'll not put plus minus, we'll simply put plus, because minus लिखा तो total negative आ जाएगा. And that's why this part will be b square is this much
minus 4AC is again this much upon 2A. That gives you, if you solve it, it gives you this root 8 is 2 root 2. So divided by करोगे तो root 2 minus 1 into 10 raised to minus 2 we are getting. Is it okay? And then if I'm interested in H plus total was 0.01 plus X tha. So that will become 10 raised to minus 2 plus root 2 minus 1 into 10 raised to minus 2. And if you solve it, we are getting simply root 2 into 10 raised to minus 2. And that is greater than 10 raised to minus 6. तो water का कोई problem नहीं है. And that's why यहीं से directly pH निकालेंगे. It will become 2 minus half log root के कारण. And that is 2 minus half into 0.3 अगर लिया. So it is coming 1.85. Is it okay? Any doubt? अनुराग, प्रिशा, क्रिश, clear क्या? Is it clear? Yes, sir. Okay. So this was the case about weak polyprotic acid. I have given you two cases. अब इतना भी नहीं करेंगे कि दोनों weak लेंगे, दोनों polyprotic देंगे, then it will become very complicated. तो normally नहीं दिखता है ऐसा question. But theoretically हम लोगों ने case 3, 5, 7 जो किया है, उसी में we can have weak monoprotic की जगह weak polyprotic, and then we can do the same step whatever we are doing here, है ना? तो वो कहानी पूरी क्लियर है. दिस वाज द स्पेशल केस, इसलिए मैंने दे दिया. Now with this, they can give you another acid with H2SO4 also. Now we need to take care of, it will be either case number 3, 5 or 7. है ना? उसी में से कोई एक फिट बैठेगा along with weak monoprotic की जगह weak polyprotic acid. Is it okay? Now after covering this case number 9 and 10, if you see, मैंने हर वो केस कवर कर लिया है जिसमें सिर्फ एसिड और एसिड्स आ सकते थे या सिर्फ बेस और बेसेज आ सकते थे. वी आर जस्ट प्लेइंग विद द परमिटेशन और कॉम्बिनेशन, है ना? जितनी पॉसिबिलिटीज है ना वो सब कवर कर रहे हैं. ठीक है. तो नाउ राइट नाउ up to this point where I am saying I have covered till case 10, I have covered all the cases possible with combination of acid or acids and base or bases. But we had not any case in which we have brought acid in front of base in the same solution, or we have not brought any salt till, है ना? तो ये पूरी कहानी के बाद I had shared one PDF. पढ़ा क्या उसको? Any doubt in that part? एक PDF शेयर किया था मैंने कल, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसेस. उसके बाद फिर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, क्योंकि उसके एक दो रिजल्ट्स हम लोग यूज. एनी डाउट इन दैट? हाँ जी. सर मुझे लुइस एसिड के एग्जांपल में डाउट था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या चल रहा होता है. ओके ठीक है, ओके ठीक है, जस्ट शो. सो बेसिकली फटाफट एक बार मैं करके दिखाई देता हूँ. So now basically if you see theories of acids and bases में एकदम बिल्कुल सीक्वेंस से जाएंगे. एंड इट वाज हिस्टोरिकल मैनर वाली थ्योरी थी. अर्लियर जैसे अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं ना, है ना, HCl is acid, NaOH is base because HCl gives H plus, NaOH gives OH minus, H plus and OH minus will form water. That was neutralization. So that means H plus donor in solution was called acid, OH minus donor in solution was called base. That was earliest theory which was called Arrhenius theory. उसके बाद people started observing it. What is so special about OH minus so that it can act as a base? So now neutralization में OH minus is reacting with H plus. That means it is forming a bond with H plus. Now H plus was a vacant orbital, and anything which is having a lone pair will form a bond with H plus. So that's why the base definition was modified in from this to this theory, and it says anything which can accept H plus or which is lone pair donor. That will be called base. And that's why if you see even NS3 is having one lone pair, CS3 minus is having lone pair, F minus is having lone pair, CS3CO minus is having lone pair,
We can have NH2 minus that is having a lone pair. So all of these will be included even if they are not having OH minus directly. Okay, clear? So that was the first modification. Second modification from this to this theory was about acid, in which they observed what is so special about H plus, and it was, I already told you that it is a vacant orbital. And that's why they told us that anything which is having a vacant orbital and which can accept the lone pair from the base will be called acid. And that's why the general definition was electron pair acceptor will be called Lewis acid. Is it okay? Now, अब इसमें देखो जितने भी पहले वाले थे वो सब तो आ ही गए क्योंकि H plus itself is having a vacant orbital है ना, 1s vacant orbital. But other than that, we can have BF3 in which B is having a vacant orbital over boron है ना. We can have BCl3, boron is having a vacant orbital. We can have BBr3, we can have Bi3. In fact, we can have any carbocation like CS3 plus, it was having a vacant orbital over it. Na? We can have Cl plus, it has got a vacant orbital. We can have S3BO3 in which B was having 3 bonds with O, but it was having a vacant orbital over it. Na? And that's why all of these can be called Lewis acids. And Lewis bases are same, matlab they are lone pair donor to the vacant orbital of Lewis acid. Is it okay? So हाँ जी. Bl acids क्या होता है? क्या ब्राउनस्टेड लॉरी. अच्छा ब्राउनस्टेड, ओके. ये जो ऊपर लिखा है ना ब्राउनस्टेड लॉरी थ्योरी, उसी को शॉर्ट में बीएल बोलते हैं. ठीक है. हाँ ओके, समझा. सो नाउ जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बेस्ड ऑन द थ्री थ्योरीज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड बेस रिएक्शन as per Arrhenius theory, it is simply reaction between H plus and OH minus which is giving you water. For if I'm saying Bronsted-Lowry theory, we will say it is the lone pair ka donation from base to the H plus donor, that is acid. है ना? So H plus will be captured by the base through its lone pair. है ना? So basically H plus is forming a bond with the base ka lone pair, and that will be a coordinate bond. है ना? That is a definition as per Bronsted-Lowry. Third definition I told you that boron ka lone vacant orbital, this vacant orbital is going to capture the lone pair, or it is forming the bond with the lone pair given by the base. And that's why we are saying OH minus is forming bond with B, and that's why it is, as a result, it is releasing H plus. Or we can say BF3 is having a vacant orbital. It is having a vacant orbital, and NS3 is having a lone pair. They will form a coordinate bond. So now these type of molecules which are formed by the combination of two molecules through coordinate bond are also called adducts. Okay, that's one extra part. Now इसके बाद जो मैंने कुछ important points बताया था, I'll tell you all these things. और ये सब GOC में भी cover किया है मैंने. But quickly I'll give you the idea कि क्या क्या जरूरी पड़ेगा आगे. Important parts सिर्फ देख लेंगे. So now कुछ important notes बताए थे मैंने. Like I told you, जो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस की तरह काम करे, दैट विल बी कॉल्ड एम्फीप्रोटिक. दैट मींस इट विल हैव एसिडिक हाइड्रोजन एज वेल एज लोन पेयर. है ना? So that's why if I want to get na easier method to get a amphiprotic substance is to give the polyprotic acid या polyacidic base ले लो. Like I have taken H2CO3 and इससे एक H plus निकाल दो, we are going to get HCO3 minus. Now it is still having acidic hydrogen and it has got a lone pair also, and that's why this will become amphiprotic. But if I remove the another hydrogen, it will become CO3 2 minus, which is having lone pair, but it doesn't have hydrogen. So it will act as base only. This was acting as acid only. But ये जो बीच वाला बनता है, that will act as amphiprotic because it has got acidic hydrogen as well as lone pair. Okay, that's one way. Similarly, दूसरा कोई आप polyacidic base ले लो, like I have taken N2H4 in which there are 2 nitrogen each with 1 lone pair. So इसको H plus देते जाओ, वहाँ H plus निकाल लेते हैं, H plus दे दो. So we have got N2H5 plus. So we have got 1 acidic hydrogen as well as lone pair is remaining 1 over 1 nitrogen, है ना? Not plus, but we have got acidic hydrogen as well as 1 nitrogen is still having a lone pair.
I'll give you by the structure. I'll show it by the structure. N2H4 is having, it is having a lone pair here, and it is having a lone pair here. So now if I just give it 1H plus, we will get, if I just give it 1H plus, we will get, यहाँ पे NS3 plus आ गया, but we still have lone pair. So we have got one acidic hydrogen, we have got lone pair. And that's why it can act as amphiprotic substance. Is it okay? Any doubt up to this point? Okay. Third point was a conjugate acid base pair. If I have removed H plus from some acid, H plus निकालने का मतलब क्या, एक vacant orbital निकाला ना. There was some bond between H and some element, and I have removed H plus. So I have left the lone pair with element. Na? That means the remaining part has got a lone pair. That means the remaining part can act as a base. Na? So that will be called the conjugate base of the given acid. So whenever we are talking about conjugate acid base pair, that will those will be the substances which are interconvertible by addition or removal of 1H plus. 1H plus. Okay. So like S3PO4 ka conjugate base will not be PO4 minus, it will be H2PO4 minus. Is it okay? That was another part. Acidic basic strength का तो order मैंने GOC में already बताया ही था ना. एक important part यहाँ से आ रहा जो बार बार use होगा, that is if I'm talking about a conjugate acid base pair, conjugate acid का K and conjugate base का Kb का multiplication will be equal to Kw. Okay. Or we can say pK of the conjugate acid plus pKb of conjugate base will be equal to pKw. Is it okay? Log लेकर माइनस लगा दिया, सिंपलीफाई किया. ये चीज बार बार यूज होने वाला है. Is it okay? Any doubt? सर इसका कुछ डेरिवेशन है? हाँ कर सकते हैं ना. There are two ways. एक तो reactions add करके कर सकते हैं, that's one way. या फिर I can write the expression like acid का K का मतलब क्या है? K will be H plus into A minus upon H. This will be called Ka of the acid H. Now, if I talk about Kb of A minus, that will be A minus will capture H plus from water and then it will form Ha. It will release OH minus, and on the left side it was having A minus. And just to show the behavior, acidic behavior of Ha, what will write? H plus plus A minus. And for showing the behavior of A minus, we'll write this will give you Ha plus OH minus. That's how it is acting as base. And this is acting as acid. Now for this reaction, we are writing this one. For this reaction, we are writing this one. Now just multiply it. If you multiply, if I call it 1 and 2, 1 into 2, देखो क्या बन रहा है? That is giving you left side में Ka of the acid Ha into Kb of the base A minus, and right side में we are getting H plus into OH minus. And what is that? It is Kw. Okay. सर वन डाउट. हाँ जी. in the Kb part, Hmm. in the Kb part, why didn't we include H2O? We never include H2O in the solution because that is in excess always. So excess part is not included in the expression of Q. We never do that. Clear? Na? So that's one part जो कि बार बार use होगा, and from the next section itself you'll see that we will be talking about that. So इसका एक important application क्या है? दो application in fact. देखो ना, multiplication is equal to Kw. That means greater the Ha का Ka value, lower will be the value of Kb of the A minus. है ना? अगर मैंने just I'll give you an example. If I give you Ka of CS3COH is 2 into 10 raised to minus 5 and Ka of HCOH is 2 into 10 raised to minus 4. Now if I ask you what will be the Kb of CS3CO minus, that will become 10 raised to minus 14 upon 2 into 10 raised to minus 5, and that will become
5 into 10 raised to minus 10. If I ask you what will be kb of HCO minus, that will become 10 raised to minus 14 by 2 into 10 raised to minus 4. And that's why it will become 5 into 10 raised to minus 11. Now if you see, हम लोगों ने K को compare किया ना, तो K of HCOH is more than or greater than Ka of CS3COH. And then if you compare Kb of HCOH, it will become less. 10 raised to minus 11 is less than 10 raised to minus 10 HCO minus. Is it okay? So that's why we are saying the one which is having greater Ka is a stronger acid. Its conjugate base will be a weaker base. So that's very important application जो बार बार use होता रहेगा. So first thing is, stronger the acid, that means greater the Ka value, more weaker will be its conjugate base. That means lower will be the Kb value of the conjugate base. Is it okay? The second part is, which is again very very important, JEE का favorite topic है. कभी इधर यूज कर सकता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो काफी ज्यादा यूज होता है ये, एंड दैट्स व्हाई जीओसी में मैंने पढ़ाया भी था. इट सेज स्ट्रॉन्गर एसिड कैन रिएक्ट विद कंजुगेट बेस ऑफ वीकर एसिड, or we can say stronger base can completely react with conjugate acid of weaker base. What does it mean? If I take Ha and Ha dash, and we are saying that Ha is stronger acid than Ha dash. So mathematically इसका मीनिंग हुआ Ka of Ha will be greater than Ka of Ha dash. एंड इसी का दूसरा मीनिंग अभी जो पहले ही एप्लीकेशन में पढ़ा था, Kb of A minus will be less than Kb of A dash minus. Is it okay? Now the reaction which I am talking about is the reaction between the stronger acid and conjugate base of weaker acid. Stronger acid is Ha, conjugate base of weaker acid is A dash minus, है ना? And इनका reaction will be the transfer of H plus from Ha to A dash minus, and that's why it will form A minus plus Ha dash. Now the claim is this reaction can be practically considered as completed, or we can say reversibility is very less. It will be mostly in forward direction. Now if you calculate iska K equilibrium, you will be getting, it will be found to be Ka of Ha upon Ka of Ha dash. और अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि K of Ha is greater than K of Ha dash. That means its value will be, K equilibrium will be more than 1. Okay, and that's why we are saying कि in such conditions we can say that the reaction is considered to be practically completed. Is it okay? अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस बनते हैं जो ऑर्गेनिक में यूज होते हैं. लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट any acid which is stronger than H2CO3 can react with HCO3 minus, है ना? That is one example. और उसके बाद मैंने लिस्ट दी थी पूरी. So any acid which is stronger than H2CO3, देखो ना, stronger acid will react with conjugate base of weaker acid. So if I'm considering H2CO3 as a weaker acid, then any acid which is stronger than H2CO3 will react with its conjugate base, which is HCO3 minus, and it will produce CO2 gas. Is it okay? So now, what are the acids which are stronger than H2CO3? I have given you the list. All sulfonic acids, all carboxylic acids, picric acid, all strong acids, all dinitrophenols, not mononitrophenol or simply phenol, all dinitrophenol, squaric acid, which is एरोमेटिसिटी के टाइम पे पढ़ाया था मैंने तुमको, HF, HN3, H2SO3, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है जो ऑर्गेनिक में पूछा जाता है वो कौन से होते हैं? दिस वन, दिस वन, दिस वन. समटाइम ये पक्के से पूछा जाता है, समटाइम्स दे कैन आस्क. ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट एसिड्स जो ध्यान में रखना है. और किसको नहीं बताना है स्ट्रॉन्गर? तो मोनोनाइट्रोफेनॉल्स को नहीं बताना है. दिस इज मोनोनाइट्रोफेनॉल. वाटर या नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल्स को नहीं बताना है. ठीक है.
फिनॉल्स भी नहीं है, हाइड्रोकार्बन्स तो बिल्कुल नहीं है. Is it okay? That was first application. Similarly, if I want NH3, NH2 minus के साथ कौन react करेगा? I need to take that कि जो NH3 से ज्यादा stronger acid हो, है ना? Any acid which is stronger than NH3 will react with NH2 minus. है ना? So NH2 minus will be capturing the H plus of that acid. It will release NH3. है ना? So that means any acid which is stronger than NH3 can react with it, and NH3 is weaker than H2CO3. So all the acids stronger than H2CO3 are definitely stronger than NH3 also. H2CO3 itself is stronger than NH3. इसके अलावा HF, H2O, H2S, all the alcohols, all the phenols. Important part is terminal alkyne is considered to be stronger than NH3. This is important. What are not stronger? Alkene, alkane, H2. ठीक है. So now that was second application. ये सब organic में आता है GOC के टाइम पे. Another part is something called labeling effect. What does it mean? What is labeling effect? Labeling effect क्या है? अभी just जो पढ़ा है ना उसी को apply करते हैं. हम लोगों ने क्या बोला था? Stronger acid will react with conjugate base of weaker acid, है ना? उस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट मानते हैं. Now मान लो H3O. अच्छा, पहली बात क्या है? We have defined some acids which are called strong acids, है ना? अभी तक हम लोग stronger weaker की बात कर रहे हैं. बट लाइक इंडिया में जैसे पर कैपिटा इनकम देखकर बिलो पॉवर्टी लाइन का एक क्राइटेरिया पुट किया जाता है ना. इफ यू आर अर्निंग लेस देन दिस मच अमाउंट, दिस मच मनी, यू विल बी कॉल्ड पुअर ऑफिशियली गवर्नमेंट के हिसाब से, है ना. सो वैसा ही somehow we need to put कि के का वैल्यू कितने से ऊपर करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बोलेंगे और उससे नीचे वीक बोलेंगे. अपन तो आपस में भी मैं अमीर तू गरीब, मैं गरीब तू अमीर कर रहे होते हैं ना. बट इट इज नॉट लाइक वी आर सुपर रिच, है ना. सुपर रिच कौन है? तो अंबानी है. ठीक है. तो नाउ वी नीड टू पुट सम वैल्यू ना, जहां से ऊपर सुपर रिच बोलेंगे, जहां से नीचे हम लोग पुअर बोलेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन का कोई क्राइटेरिया लाएंगे. तो वैसा ही डिसाइड किया गया कि इफ यू आर हैविंग सम एसिड का के वैल्यू 1 से ज्यादा तो इट विल बी कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है. तो इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन एनी एसिड विच इज हैविंग के लेस देन 1. तो स्ट्रॉन्गर वीकर तो कहीं भी कर सकते हैं. वी हैव कंपेयर्ड HCOH एंड CH3COH की स्ट्रॉन्गर इज HCOH एंड वीकर इज CH3COH. But if you see the data of Ka value of both the acids, both of them are less than 1. So both of them are weak acids. In between those two, HCOH is stronger, CH3COH is weaker. बहुत careful रहना इस language से. Here when we are comparing the acidic strength, we are talking about stronger कौन है, weaker कौन है. If I ask you दोनों में से strong कौन है, then what will say? HCOH. Strong कौन है? Oh, neither of them are strong. Neither of them are strong because both of them are having K less than 1. So both of them are weak acids. So the point is, when we say strong acids, they will be stronger than H3O plus. So that is the criteria put that any acid which is stronger than H3O plus will be called strong acid. Any base which is stronger than OH minus will be called strong base. Is it okay? Now, within strong acids or weak acids, we can compare which is stronger, which is weaker. Like I told you, both of these acids are weak acids, but in between these two acids, this is weaker acid, this is stronger acid. But we can't say this is strong acid. Understanding the point? Okay, now after knowing that, we are talking about something called leveling effect. And what does it mean? So already we are knowing that all the acids which are stronger than H3O plus. So if I write H3O plus here ना, तो इधर से ऊपर जो है ना, all those strong acids जिनका मैंने नाम बताया था, HClO4, HNO3, H2SO4, HCl, HBr, HI, practically ये सब normally तुम्हारे सामने दिखेंगे. HCl, HBr, HI. If I say these are stronger acids, so they will be called strong acids. And anything below H3O plus will be called weak acid. Like we have HCOH, we have CS3COH, all these things. Okay. Now
कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्गर वीकर एनीथिंग कैन बी स्ट्रॉन्गर देन अनदर एसिड, है ना. लाइक HCOH इज स्ट्रॉन्गर देन CH3COH, CH3COH इज वीकर देन HCOH. बट इफ आई आस्क दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, विल नॉट से एनीथिंग, है ना. बोथ ऑफ देम आर वीक एसिड्स, है ना. इज इट ओके? लैंग्वेज इज क्लियर ना. नाउ इफ आई से I want to have a reaction between HClO4 and H2O. Should we consider it to be completed? अभी जस्ट एक लाइन पढ़ा था ऊपर, स्ट्रॉन्गर एसिड रिएक्ट्स विद कंजुगेट बेस ऑफ वीकर एसिड. इफ आई कंसीडर H3O plus to be the weaker acid, तो HClO4 is stronger acid. वीकर एसिड का कंजुगेट बेस क्या है? कंजुगेट बेस ऑफ इट विल बी व्हाट? H3O plus Stronger. H2O. So we are saying stronger acid is reacting with conjugate base of weaker acid, and that's why this reaction is considered to be completed. So we'll say it will form ClO4 minus plus H3O plus. What does it mean? इसका मतलब है, even if we are saying that acidic strength of HClO4 is greater than that of H3O plus, water में डाला तो it will be completely converted into H3O plus ना. So its behavior or its acidic strength in water will be same as the H3O plus, because everything has been converted into H3O plus. And that's why we are saying that in solution, this is important part, in solution, any strong acid has acidic strength equal to that of H3O plus. And similarly, if I am having any base which is stronger than OH minus, like NH2 minus, in reaction with H2O, will form NH3 plus OH minus, and this reaction is also considered to be practically completed. So whatever base we have taken, even if it was stronger than OH minus, in water it will react with the water itself and it will get converted to OH minus. And that's why we are saying कि water के अंदर the strongest acid will be H3O plus and the strongest base will be OH minus, because anything stronger than H3O plus is also getting converted into H3O plus. Anything stronger than OH minus is also getting converted into OH minus. So that line I have not written, but I'll write it here. In water, the strongest acid, and this is in water, है ना? ऐसे तो comparison किया हुआ ही है. The strongest acid is H3O plus and the strongest base is OH minus. Okay. So मैंने बोला H3O plus से ज्यादा stronger है HClO4, but water के अंदर जाके उसका acidic strength बराबर हो गया ना, तो we have leveled it ना. Whatever was higher than H3O plus has come to the level of H3O plus ना, and that's why it is called leveling effect. Anything stronger than H3O plus has got acidic strength equal to H3O plus in water. Anything stronger than OH minus as base will get basic strength exactly same as OH minus in water. तो जितना महल खड़ा करना है कर लो, सारा का सारा OH माइनस के बराबर आ जाएगा. जितना ऊपर बढ़ाना है फ्लोर बढ़ा लो H3O प्लस के ऊपर, बट वाटर के अंदर एवरीथिंग विल गेट कन्वर्टेड टू H3O प्लस, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट. इज इट ओके? Sir, I have one doubt. Yeah. If you have two acids, both the same amount, and they're both dissolved into an equal amount of water, and they both have the same basicity, they will have the same acidity then. Again, you are getting confused between the words. When we are talking about acid with same basicity, it is the number of acidic hydrogen present with the acid. It has nothing to do with the strength. Like if I am having HClO4 and H3PO4, HClO4 has just one acidic hydrogen, but it is strong acid. H3PO4 is having three acidic hydrogen, still it is weak acid. Okay? Clear na? Okay, anything else? हाँ, Krish. सर तो हम यहाँ मतलब ये चैप्टर में और आगे भी मान के चल रहे हैं कि मीडियम वाटर ही होगा. हाँ, मतलब मीडियम वाटर ही है.
समटाइम्स जो स्टार्ट में मैंने बताया ना प्योर अमोनिया वाला में NH2 माइनस कितना होगा, NH4 प्लस कितना होगा, दैट मच वी हैव हाँ टू नो, बट अदरवाइज वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, विल बी डूइंग एवरीथिंग इन वाटर. हाँ, किसी ने बोल दिया अमोनिया के अंदर, देन विल से इन अमोनिया हाँ सिमिलर मैनर में, इन अमोनिया द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विल बी NH4 प्लस, हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस विल बिकम NH2 माइनस. NH2 माइनस. यस, क्लियर है ना? हम्म. को ये क्रिएट किया जा सकता है क्वेश्चन कि इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेवलिंग इफेक्ट इन अमोनिया, then we'll say the strongest acid is NH4 plus and strongest base is NH2 minus. Similar way. Okay. Anything Sir, else? one more doubt. Hmm. If we when we dissolve an acid into water, all of the H plus from the acid reacts with H2 and becomes H3O plus now. So Again, for that again, aqueous solution, repeat yourself again. I missed the for sentence. a strong acid dissolved in water, the H plus that the acid releases reacts with H2O to become H3O plus. Hmm. So if there is no H plus in the water, in the solution there is no H plus, then how do we talk about pH? Who says there is no H plus? Even if you are having H plus, na, it will always be associated with H2 start में मैंने बताया था, due to its very high polarizing power. So H plus is nothing but H plus associated with water molecule, which is H3O plus. So we're not considering it as a compound. It's like We coordinate can't, compound. we can't have independent H plus in solution itself. You know, we can't have. And that's why whenever we are saying pH, na, we are saying H plus, but it will always be associated with some water. Okay, डन ना? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैंने खुद से बनाया बट मुझे बहुत अच्छा लगता है. दैट क्वेश्चन इज, क्योंकि वो ट्रिकी है और इसी से हम लोग अगला सेक्शन पे मूव करेंगे. इट कैन हैव वन और मोर देन वन क्वेश्चंस. मतलब बाकी तो करते हो, कंजुगेट बेस क्या होगा, कंजुगेट एसिड क्या होगा, एम्फीपोटिक क्या क्या होगा, ये सब किया हुआ है, देख लेना एक बार जस्ट. जो मैंने PDF दिया है उसमें देयर आर क्वेश्चंस, but this question is really a conceptual question. If you have not got the concept right now, you will be answering it wrong. आज जितना बताया उससे हो जाता. Chris, it can have one or more than one. I'm not saying always more than one, but it can have one or more. हाँ सर, पता है एक ऑप्शन Okay. हुआ, मतलब आई कुड डू दैट. सही है. Okay. Chris has said D only. Hers is saying C and D. Anyone else having any other answer? Prisha is saying A and B. Okay. Okay. Again, I'm reminding you, I'm asking incorrect. Okay. It is also saying A and B. अब ये कहानी अभी तुम्हारे जूनियर बैचेस के बच्चे आ गए हैं, अब उनको सिखा रहा हूँ कि मैं 1 साल 2 साल तक बोलता रहूंगा, इनकरेक्ट पूछे तो इनकरेक्ट ही बताना. अभी तक तुम्हारे साथ ये हो रहा है. मैं हर साल हर बैच में बोलता रहता हूँ, एंड तक बोलता हूँ, एंड आई ऑलवेज रिपीट, ये होगा तुम्हारे साथ. बिफोर रिपोर्टिंग द आंसर जस्ट चेक दैट व्हाट इज बीइंग रिपोर्टेड, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. ओके, लेट्स सी. उल्टे से चलते हैं, नीचे से चलते हैं. अभी जस्ट देखा था ना, स्ट्रॉन्गर एसिड का मतलब के इज ग्रेटर है ना, तो इसका कंजुगेट बेस विल हैव Kb लेस. Okay, so this is right, this is correct, so not our answer because it is correct. That's why I told you, always you repeat this sentence in your mind before reporting the answer, है ना? Again, वैसा ही weaker acid will have less Ka value, so conjugate base will have greater Kb value, and that's why this is correct, so not our answer. सर हाँ. सर बट अगर कोई 7 का ये ले लिया हमने एसिड, लेट्स से, राइट, pH 7 का, तो pH इसका भी, pH से कोई बेस का फर्क भी नहीं 7 ही. पड़ता है. 1 minute. We can have a strong acid का solution जिसका pH हो सकता है 6.5 हो जाए, 6.9 हो जाए,
we can have a strong acid का solution. That will depend on the concentration. हाँ When we are saying strong base, हाँ इसका pH से लेना देना नहीं है, इसका ionization से लेना देना है ना. So when we are saying weaker, stronger, again I am telling you, I can have नहीं, HClO4. क्योंकि हमें ऐसा सिखाया था, Hmm? हमें पेस में ऐसा सिखाया था कि मतलब तुम पीएच से देखो, तुम्हें पीएच कितना आ रहा है उससे देखो। मतलब मैं HCl का एक सॉल्यूशन दूंगा जिसका pH 6.79 आएगा, 10⁻⁷ हाँ analytical solution. And I can give you हाँ वो CH का सॉल्यूशन 0.1 है जिसका pH 2.85 आएगा, फिर क्या करूं? हाँ वही ना मतलब। That is not about the strength of the acid. Okay, strength of the acid का कंपैरिजन होना चाहिए with equal concentration, है ना. वो हम लोगों ने बात की थी कि √K का रेशियो ले लेते हाँ हैं ना. तो दैट वाज विद अ गिवन कंसंट्रेशन. ऐसे अब मान लो मैंने HClO4 का एक सॉल्यूशन दे दिया जिसका pH आ रहा है 6.79 एंड आई एम हैविंग CH3COH का सॉल्यूशन व्हिच इज हैविंग pH 2.85. कैन आई से CH3COH इज स्ट्रॉन्गर देन HClO4? बकवास हो जाएगा ना, मुंह पे मुक्का मार देगा कोई, क्या बोल, है ना. तो इट इज नॉट अबाउट व्हेन वी आर कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, वी कंपेयर देयर K वैल्यूज. नाउ इफ आई से stronger weaker में we will say HClO4 is stronger than HCOH, HCOH is stronger than CH3COH. But when I say strong कौन है, तो this is only strong, these two are weak acids, है ना, because their K values are less than 1. Is it okay? Now अब ध्यान से समझो, when I say strong acid its K is greater than 1, when I say weak acid its K is less than 1. तो stronger weaker वाली कहानी तो C and D clear है ना सबको. Anyone having any doubt about C and D? No doubt na. Both of the statements are correct, so they are not our answers. Now I'll talk about option A and B. A says, चलो A की जगह पहले B देखते, उल्टा चल रहे तो B देखते हैं. B में it says conjugate base of strong acid. मैंने जैसे ही बोला strong acid, I have got K value greater than 1. If I take conjugate base of it, we'll have Kb equals Kw upon Kn. And if denominator is greater than 1, then this whole thing will become less than Kw. And less than Kw का मतलब क्या हो गया? Like 25 degrees if it has become less than 10⁻⁴. It's weak, na? So it will always be weak. And that's why this is also correct statement. So not our answer. Okay? तो सब करेक्ट है क्या? देखते हैं. Now let's go to A. सब correct होता तो फिर क्वेश्चन कैसे बनता? कुछ तो आता. Now let's go to A option. It says we are having a weak acid. वीक एसिड का मतलब होता है K लेस देन 1, लेकिन कितना कम ये तो नहीं बोलते ना. वी कैन हैव 10⁻⁶, 10⁻⁷, वी कैन हैव 10⁻15 आल्सो, है ना. आई विल गिव यू टू केसेस. तो कंजुगेट बेस का Kb विल अगेन बी Kw अपॉन K ऑफ द एसिड. आई एम गिविंग वन एग्जांपल. Ka इज इक्वल टू 10⁻⁵, वीक ना. जरा Kb ऑफ द बेस बताओ कितना है, conjugate base. I'm writing Cb, that means conjugate base. 10⁻⁻11। 10⁻⁴ by 10⁻⁵, na? हाँ That is 10⁻⁹. It's weak because it is less than 1. If I give you another weak acid, which is K, which is having K equals 10⁻⁵, tell me Kb of conjugate base. 10. It has become 10, which is greater than 1. It has become strong, na? Understood the point, na? And that's why we'll say only this is incorrect, because always wala case is not. Okay? And that's why we'll say it is incorrect. And that's why this is our answer. Understood the point, na? So we need to be very careful about the words stronger, weaker, or strong, weak.
So when we say strong, it has got a criteria that strong acid should have Ka equals greater than 1. Weak acid will have Ka value less than 1. Strong base will have Kb value greater than 1. Weak base will have Kb value less than 1. ठीक है. स्ट्रॉन्गर वीकर दोनों हो सकता है. एक 10⁻⁴ है, 10⁻⁵ है. दोनों आपस में ही लड़े पड़े, मैं स्ट्रॉन्गर मैं वीकर, है ना. बोथ ऑफ देम आर वीक. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन कि यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होता है. एंड यहीं से हम लोग वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस. बाकी सारे क्वेश्चंस देख जाओगे जो मैंने उसमें दिया है. Salt hydrolysis में now for the first time we are going to talk about salts. So whenever you will be seeing a salt, now always consider it as a combination of its cation and anion. So salts को हमेशा देखना है कि they are salts are the sources of cations and anions. ठीक है. And then we'll see the important we see the behavior of its cation and anion, and then we'll decide कि what will be the behavior of salt in water. ठीक है. Before going to that part, if I ask you, the section का name is salt hydrolysis. The name of the section is salt hydrolysis. But वहीं से एक basic question मेरा ये बनता है कि I have heard two words which are similar to each other. One is hydrolysis, another is hydration. What is the difference between these two terms? Hydration is addition of water. Hydrolysis is breakdown in presence of water. Okay. So simple meaning hydration हम लोग कब पढ़ते हैं जब periodic table, periodic properties वगैरह पढ़ते हैं या फिर chemical bonding में आके definitely पढ़ना होता है. So like if I'm putting NaCl in the solution, na, Na plus will get surrounded by water molecules due to polarity in water molecules, है ना, OH bond. Similarly, Cl minus will also get surrounded by water molecules, but it is not reacting with that. So just getting surrounded by solvent molecule in general is called solvation, and if the solvent is water, it is called hydration. Just getting surrounded by the water molecules will be called hydration. But if it reacts with water, it is called hydrolysis. Understood the point now? So reaction with water molecule will be called hydrolysis. Getting surrounded by water molecules will be called hydration. Is it okay? So that's the first point. Now I told you that whenever we have to see salt क्या करने वाला है water में, always say it's cation and anion. Now I've got 3 points, 3 important points, जिसकी basis पर we'll identify the behavior. Already I told you if I am having strong base का मतलब है Kv greater than 1. तो इसका जो cation होगा it will be extremely weak acid, है ना. जिसका Kv greater than 1 है उसके cation का Ka value will be less than 10⁻⁴. And that's why such type of acid को we can neglect. They are just present there. They उनकी औकात नहीं reaction करने की. वो जितना करेंगे ना उसको ignore कर सकते हैं. And that's why we consider that they are not undergoing hydrolysis. ये कौन से cations है जो strong base के cations होते हैं? Na plus, K plus, Ba2 plus. ये main आएगा. बाकी हम लोगों ने list पूरी देखी थी, है ना. You can write Rb plus, Cs plus, all those things, है ना. But practically you'll be getting these types. Again, if I'm having a strong acids, जिसका K value was greater than 1, its anion will be extremely weak base because its Kb value will become less than 10⁻⁴. That means less than Kw. And that's why again, we'll ignore the hydrolysis of these anions also. So we'll say, वो कौन से bases हैं? So we have ClO4 minus, Cl minus, Br minus, I minus, NO3 minus. ऐसे H2SO4 का अगर exceptional behavior ना देखे, तो we'll say sulfate also. ठीक है. If they have not given you K2 of the H2SO4 वाला जो start में हम लोगों ने discuss किया, then we can consider that also. Now, किसकी हाइड्रोलिसिस कंसिडर करने की है? तो इनके अलावा सबकी करने की है. सिंपल सी चीज है. तो इफ आई एम हैविंग कैटायन ऑफ वीक बेस और अनायन कमिंग फ्रॉम वीक एसिड, उनकी हाइड्रोलिसिस हम लोग कंसिडर करेंगे. इज इट ओके? नाउ कैटायन ऑफ वीक बेस, विल इट बी स्ट्रॉन्ग? वीक बेस का कैटायन विल इट बी स्ट्रॉन्ग? ऊपर दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से.
जैसे स्ट्रॉन्ग वीक एसिड का के अगर मैंने 10⁻⁵ लिया ना, तो कंजुगेट बेस इज कमिंग केबी इज कमिंग विद केबी इक्वल्स 10⁻⁹ इट इज ऑल्सो वीक ना. तो वीक एसिड का कंजुगेट बेस कैन बी वीक ऑल्सो, वीक एसिड का कंजुगेट बेस कैन बी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. बट नॉर्मली प्रैक्टिकली जो लेते हैं ना, दे आर सफिशिएंटली वीक ओनली, बिकॉज हम लोग नॉर्मली जब वीक एसिड लेंगे तो देयर के वैल्यू विल बी 10⁻⁷ जैसा उस रेंज में कुछ भी रहेगा ऐसा. 10 टू मतलब 1 से लेकर 10⁻14 के बीच में नॉर्मली. ठीक है. तो if that is the value, we'll be getting always kb also of the conjugate base in between these numbers only. Is it okay? And that's why cation of weak base, like if I say मान लो कोई भी ले लिया, जैसे NH4 प्लस ले लिया, I can take RNH3 प्लस. ठीक है. इस टाइप के कंजुगेट बेसेस जो होंगे, I can take pyridinium cation. These are the some of the cations which are coming from weak base का cation है ना. सिमिलरली अनायंस ऑफ वीक एसिड्स, तो वीक एसिड्स तो भरा पड़ा है, उनके अनायंस HCO माइनस, CH3CO माइनस, F minus, because HF was weak acid. We can have like ClO minus, we can have CN minus, etc. All of these are anions of weak acids, and that's why इनका hydrolysis consider करना है. Is it okay up to this point? Any doubt? Any doubt? चलो, नाउ अब ये जब आएंगे तो डेफिनेटली विल सी द सॉल्ट क्या है. मान लो बोल दिया सोडियम एसिटेट, किसकी हाइड्रोलिसिस लेनी है? सोडियम एसिटेट है. What will undergo hydrolysis and what will not undergo? Sodium acetate. Sodium The acetate anion का will undergo hydrolysis. anion is acetate ion, which is coming from acetic acid का anion है ना. That's why that will undergo hydrolysis. But sodium plus Na plus is coming from NaOH, which is strong base. तो Na plus की hydrolysis को ignore कर देंगे. रफ लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ ये Na plus K plus Ba2 plus Cl minus Br minus ये सब नालायक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाइड्रोलिसिस. इनका कोई काम. अगेन प्रिशा, यू आर सेइंग अगेन वीक का स्ट्रॉन्ग बोल दे रहे हो. आई विल से स्ट्रॉन्गर वीकर, बट वीक का स्ट्रॉन्ग ही होगा ये जरूरी नहीं है. बट ठीक ठाक हाइड्रोलिसिस हो जाएगी. जैसे मैंने बताया कि CH3COH इज हैविंग, इफ यू सी मैंने अर्लियर भी एग्जांपल दिया था, CH3COH का Ka was 2 into 10⁻⁵, कंजुगेट बेस का K भी इज 10⁻10 में है. इट इज नॉट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे ना. इनफैक्ट जितना एसिड स्ट्रॉन्ग था उतना तो बेस भी स्ट्रॉन्ग नहीं, 10⁻10 में आ रहा है. सो बट इट इज स्टिल ग्रेटर देन 10⁻14. तो 10⁻14 से ज्यादा रहे ना तो वी स्टिल कंसीडर कि ठीक है, उसको हम लोग एज अ बेस ट्रीट करेंगे और उसकी हाइड्रोलिसिस कंसीडर करेंगे. इज इट ओके प्रिशा? Yes, sir. ओके. सो नाउ बेसिकली इतना कर लेने के बाद, नाउ इफ आई हैव गॉट अ पर्टिकुलर अनायन विच इज अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब कुछ भी नहीं है, इनका बिहेवियर एज बेस है. सो व्हेन आई से anion will undergo hydrolysis, the behavior will look like this. और ये क्या है यहाँ पर देखो ना, A माइनस की हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? इट विल कैप्चर H प्लस फ्रॉम वाटर, इट विल गिव यू OH माइनस, है ना. So it is nothing but the behavior of this A minus ion as a base. तो इसका K इक्विलिब्रियम क्या होगा? तो that will be Kb of A minus. Is it okay? Which is nothing but Kw upon Ka of Ha, the conjugate acid, है ना. इसी को in this section we start calling it KH, which is called KH is called hydrolysis constant. This is called hydrolysis constant. बट है कुछ नहीं, नया कुछ नहीं है. अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं जब बताऊंगा ना ये सब दिखाऊंगा कि मैं वो जो केस नंबर 3 से लेकर 10 तक करते रहे ना, एवरी टाइम द केस विल बी रिपीटेड. तो दिस इज अ वीक बेस जिसका कुछ के भी है, एंड वी नो दैट वीक बेस कैसे हैंडल करना है. केस नंबर 4,
इज इट ओके? अंडर रूट KB by C चेक करते थे, आफ्टर दैट इफ इट इज कमिंग लेस देन 0.1 तो अंडर रूट KB into C was the OH minus, है ना? That was the case. हाँ हर्ष। So, sir, for compounds containing cations of weak bases and anions of weak acids, the cations and anions like of weak base and weak acid, they will be hydrolyzed and they'll break down to form acid slash base, whilst the other counterpart will just remain in the solution surrounded by water. Okay, we'll see that case. That will be the case number 4, where we'll be having a salt which is having cation coming from weak base and having anion coming from weak acid. We'll discuss about that. Okay. So right now, individually, we are saying if anion only is undergoing hydrolysis, we are getting this reaction. Hai na? If cation only is undergoing hydrolysis, this is the reaction, and this is the acidic behavior of B plus. Hai na? So its constant will be K of B plus, which is Kw upon Kb of the conjugate base. Is it okay? Clear point? हाँ Krish. सर मैं एक्चुअली मीटिंग से निकल गया था। आपने क्या बोला अभी? 2-3 पॉइंट बोले मैंने सिर्फ अभी। पहली बात, हाइड्रोलिसिस किसकी कंसीडर, ये हाइड्रोलिसिस वर्सेस हाइड्रेशन सुना था। हाँ हाँ। उसके बाद मैंने क्या बोला कि किसकी उसके बाद हाइड्रोलिसिस, वो स्ट्रॉन्ग एसिड के कटायन और अनायन, स्ट्रॉन्ग एसिड के कटायंस और स्ट्रॉन्ग बेस के अनायंस को कंसीडर करना। उल्टा किया। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, HCl, तो उसका हाँ अनायन हाँ, Cl माइनस की हाइड्रोलिसिस को कंसीडर नहीं करना। नहीं करना है, वैसे ही NaOH का कैटायन Na प्लस की हाइड्रोलिसिस को कंसीडर नहीं। नहीं करना है। हाँ बट जैसे वीक एसिड या वीक बेस आया तो वीक एसिड के अनायन की हाइड्रोलिसिस विल बी कंसीडर्ड, weak as base के cation की hydrolysis will be considered, and I have given you the list, है ना? जैसे NH3 is weak base तो NH4 plus की hydrolysis को consider करना है। हाँ। ठीक है? वैसा ही HCOH was weak acid तो HCO minus की hydrolysis को consider करना है। ठीक है? सिंपल। क्योंकि वो वीक है और वो इक्विलिब्रियम इसको एस्टैब्लिश। स्ट्रॉन्ग मत बोल देना आप, इसको अब स्ट्रॉन्ग मत बोल देना फिर। हाँ हाँ दैट्स व्हाई आई गिव यू द नंबर कि जैसे इसका वैल्यू जो आएगा ना, इसका केबी जो वैल्यू आएगा ना, दैट विल बी 5 into 10⁻⁻11 जैसा, but that is हम्म, not strong, but it's still greater than 10⁻⁻14। तो हाँ KW से ज्यादा रहे ना तो उतना ले लेते। हाँ। KW से ज्यादा अगर K या KB of the acid and base है ना, we will consider the behavior of that acid and base. हाँ Is it okay? यस। Now, after that, if acid is undergoing hydrolysis, like B plus is undergoing hydrolysis, तो इसका K is nothing but K of that acid, है ना? Which is Kw upon Kb of the conjugate base. Is it okay? Like if I am having NH4 plus, तो इसका behavior can be seen as NH3 plus H plus, या फिर तुम NH4OH भी लिख सकते थे, और we can also write NH4 plus plus H2O giving NH4OH प्लस H प्लस, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। इन दोनों के लिए इफ आई आस्क के इक्विलिब्रियम कितना होगा तो आई विल से इट विल बी K of NH4 plus, which is nothing but Kw upon Kb of NH3 or NH4OH. Simple. So now if I have got this cation in a salt, so that gives you the case number 4, है ना? Sorry, case number 3 only, which is a weak acid, है ना? Is it okay? And we have got the case. अब इसी में मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था कि यही जो K है ना, इनको हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोल देते हैं, बिकॉज वी हैव नेम्ड द सेक्शन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अभी तक अल्फा बोलते थे, स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग एज स्मॉल एच, एंड दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। वर्ड सिर्फ बदल गए हैं, सिंबल्स बदल गए, बट कहानी वही है, केस नंबर 3 to 10। इज इट ओके? सिमिलरली A माइनस जैसा मैंने बताया, इफ आई गिव यू CS3CO minus, CS3COO minus, its behavior as base will be like it will be capturing H plus from H2O to give you OH minus in the solution. That means it is a weak base, which is case 4. And then इसका K equilibrium, जिसको इस चैप्टर में we are calling it, इस सेक्शन में we are calling it KH, we can say it is nothing but Kb of CS3CO minus, and which is nothing but Kw upon Ka of CS3COH। बस इतनी कहानी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड।
बट एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है जो कि दिखता है तुमको बुक्स में नॉर्मली, बिकॉज वी हैव गॉट कि अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आ गया तो फिर उधर जाने की बजाय इफ आई एम हैविंग रेडीमेड फॉर्मूला तो मैं डायरेक्टली उसको लगा दूं। ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी अदरवाइज वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो अप टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड बफर सॉल्यूशन ना, आई विल ऑलवेज बी रेफरिंग फ्रॉम केस 3 टू से लेके 10 तक। यू विल सी दैट कि एवरी टाइम आई विल रेफर दैट केस 3 में ये किया था, केस 4 में ये किया था, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दैट आई विल बी रिपीटिंग दोज केसेस ओनली, बट बिहेवियर पहचानना है कि व्हाट इज अवेलेबल, उसका बिहेवियर कैसा है। इज इट ओके? नाउ विल गो केस बाय केस। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 टाइप के केसेस में डिवाइड कर सकते हैं मेनली सॉल्ट्स को। व्हाट आर दोज केसेस? Cations can come from strong base or weak base. Anion can come from strong acid or weak acid. So 2 into 2 4 cases बन गए। So that's why we have got 4 cases in which first case देखो strong acid से anion आया है, strong base से cation आया है। दूसरा केस वीक एसिड से अनायन आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से कैटायन आया है। थर्ड में स्ट्रॉन्ग एसिड से अनायन आया है, वीक बेस से कैटायन आया है। एंड द लास्ट केस इज वीक एसिड से अनायन आया और वीक बेस से ही कैटायन आया है। इज इट ओके? तो दीज आर द 4 केसेस जिसकी बात आगे करने वाले हैं। द सिंपलेस्ट केस इज फर्स्ट केस इन विच स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला अनायन भी नालायक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाला कैटायन भी नालायक होता है। तो दे आर नॉट अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस। इफ दे आर नॉट अंडरगोइंग द हाइड्रोलिसिस तो पीएच कितना हो जाएगा? हाफ पीकेडब्ल्यू, विच इज 7 at 25 डिग्री। सिंपल। सो दैट्स व्हाई केस 1 इज वेरी सिंपल, उसमें कुछ ज्यादा करने का नहीं है। This is first case. Neither anion nor cation will undergo hydrolysis, and that's why the solution will remain neutral with pH equals pKw, and that will be 7 only at 25 degrees. If you see नीरज कुमार की बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा ही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बनता है इन विच यू आर हैविंग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl ओनली, बट दे हैव टॉक्ड अबाउट अ टेम्परेचर अदर देन 25 डिग्रीज। तो वहां पे 7 मत रिपोर्ट कर देना। दे विल गिव यू द Kw का वैल्यू, कैलकुलेट हाफ pKw एंड दैट विल बिकम द pH at for that solution. Is it okay? तो बहुत ही क्लियरली समझ लेना। नॉर्मली विल बी टॉकिंग अबाउट 25 डिग्री सी, बट जैसे उन्होंने Kw का वैल्यू अदर देन 10⁻⁴ दिया हुआ है और टेम्परेचर अदर देन 25 डिग्री सी दिया हुआ है, then neutral pH is not 7, it is half pKw, and we need to find out that how much is that half pKw. Is it okay? So that's one case. Second case is if I am having anion which is undergoing hydrolysis but still cation is not undergoing hydrolysis, ऐसा केस आ जाए तो क्या? नो, पहला पॉइंट क्वालिटेटिवली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इफ अनायन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस ना, तो हम लोगों ने यही रिएक्शन देखा है ना। अनायन की हाइड्रोलिसिस का मतलब इसका बिहेवियर एज वीक बेस है ना, एंड वीक बेस विल मेक द सॉल्यूशन बेसिक। सिंपल सी बात है। बहुत ज्यादा बेसिक नहीं कर पाएगा बट बेसिक तो बनाएगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस अनायन OH minus is being released, and that's why the salt का solution, aqueous solution of such salts will be basic in nature with pH greater than half pKw or greater than 7 at 25 degrees C. सिंपल। और हम लोगों ने पहले भी बात की है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब नथिंग बट Kb ऑफ A माइनस विच इज Kw अपॉन K ऑफ Ha। सिंपल है। ठीक है। नाउ विल डू द कैलकुलेशन ऑफ इट्स pH एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसका वैल्यू मैंने H बताया था। ऑलरेडी वी हैव सीन एवरीथिंग। सिर्फ क्या है ना कि इसमें उसका Kv डायरेक्ट ना देके दे विल गिव यू द K ऑफ Ha। देखो जो काम अभी तक करते थे वही काम किया है। A minus initially if it was C, then C into 1 minus H। H अल्फा को अब H से रिप्लेस कर दिया। Now this it will have name degree of hydrolysis. It was called, इसका नाम क्या था? What is the name of KH? Hydrolysis constant. So we need to be very careful about the word. They are asking you hydrolysis constant, we need to report KH. If they are asking you degree of hydrolysis, they are asking about small h. Okay, so this is hydrolysis constant. केमिस्ट्री में 10-20% स्टोरी है, वर्ड्स की है, बहुत केयरफुल रहना है।
अपना केमिस्ट्री अच्छा हो जाता है, मैथ अच्छा हो जाता है, इंग्लिश में फेल हो जाता है। ओके, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दोज इंग्लिश वर्ड्स, है ना। सो H is small h is degree of hydrolysis, KH is hydrolysis constant. Okay, now whatever we have done, अभी ऑलरेडी किया हुआ है ना ये सब। क्या किया था, अंडर रूट KB अपॉन C चेक करते थे ना। इसका मतलब दिस टाइम विल बी चेकिंग, जो मैंने प्रैक्टिकली बताया, दे विल नॉट गिव यू केवी का वैल्यू, दे विल गिव यू KW अपॉन KA ऑफ HA का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। विल चेक दिस वन, है ना। If this is 0.1 say less or equal even, then we will say OH minus is nothing but अंडर रूट KB इंटू C, यही तो किया था केस। तो दिस इज नथिंग बट केस 4 जो किया था ना वही है, बस वही जहां जहां KB है उसकी जगह KW बाय K, विच मीन्स इट इज नथिंग बट अंडर रूट, अभी आगे से मैं K कैरी कर रहा हूँ, K ऑफ HA इतना नहीं लिखूंगा आगे, तो KA ये हो गया इंटू C हो गया ना। इज इट ओके, फिर से लिख दे रहा हूँ, KB का वैल्यू इज KW अपॉन K, है ना। सो दिस हैज बिकम KW अपॉन KA, और ये तो C का C है, ये तो किया था। Now I will check that if it is coming greater than 10⁻⁻⁶, तो यहीं से POH निकल आएगा। So POH in this case, अच्छा अभी भी ये इस कंडीशन के साथ है, तो POH in this case will be equal to minus log of this whole thing. Is it okay? Now if you solve it, we are getting, एक तो हाफ निकल के आ रहा है, इसके अलावा माइनस लॉग KW विल बिकम PKW, उसके आगे जो आ रहा है वो प्लस बन जाएगा, इसलिए माइनस आगे मैं लिखूंगा माइनस PK and minus log C. That means it has become half PKW minus in bracket half into PK plus log C. हाँ जी क्रिश। सर अगर हम माइनस को अंदर ले ले लॉग के, मतलब राइट। 1/C हो जाएगा ना। हाँ, तो मतलब पी पी के इंटू सी अपॉन के डब्ल्यू हो जाएगा ना। फिर से बोल, हाँ, माइनस हम को लोग उल्ट अंदर ले रहा है अगर लॉग के अंदर, तो लॉग के अंडर रूट अंदर K ले गए इंटू तो सी वॉज रेसिप्रोकल हो जाएगा KW, ना उसका, राइट। तो के इंटू सी आएगा ना। ऊपर आएगा और KW नीचे आएगा, हाँ, बट तो व्हेन अभी वी हम से PKW ना, इट इज माइनस लॉग ऑफ KW, PKW हाँ इज नॉट log KW, हाँ, समझ गया समझ गया। understood ना। So that's why if I have to calculate pH na, so that will become PKW minus POH. If you do that now, we'll be getting half PKW plus हो जाएगा, and then half times PKA plus log C, and that will be 7 plus half PK plus log C at 25 degrees. So this is only valid at 25 degrees C. This is valid at any given temperature, but this is under this assumption. ये हमेशा याद रखना है। तो ये जो मैंने pH निकाला है, दिस वाज विद दिस assumption. मेंस है मत चेक करो assumption, एडवांस है डेफिनेटली चेक, ठीक है। दैट्स वन पार्ट। नाउ इफ assumption is not valid, we need to solve the quadratic. So if this under root KB upon C, which is under root KW upon Ka of the acid HA into C, if it comes greater than 0.1, then solve CH square upon 1 minus H equals KH, and KH was nothing but KW upon Ka. To get H, है ना, to get H, and then we are saying OH minus is nothing but C into H. If it is coming greater than 10 is to minus 6, to POH will become minus log of CH. And then we'll say pH will be 14 minus POH, or PKW minus POH. Is it okay? Clear on a point? Any doubt up to this point?
Second part is, if I am having a salt which is having anion coming from strong acid, that is the third case in fact, and cation coming from weak base. वही उल्टी कहानी है, H प्लस को OH माइनस कर देना है, Ka को Kb कर देना है, बाकी सब सेम हो जाएगा. पिछला सॉल्यूशन बेसिक आया था, ये सॉल्यूशन अगला सॉल्यूशन एसिडिक आ जाएगा. Now if you see this case, cation is undergoing hydrolysis, cation undergoing hydrolysis, that means it will release H plus, so that solution will become acidic. Yeah, Harsh. So in case 2, we're not going to do for the other assumption that what? if CH is less than 10 raised to minus 6. वो तो मैंने बोल ही दिया ना कि वो जैसे ही आ गया ना, we had that solution of K H वाला, मतलब जैसे बेसिक सॉल्यूशन है, OH minus total will be OH minus from base plus under root OH minus from base का स्क्वायर प्लस 4KW अपॉन 2. यही किया था ना. ये तो हमेशा ही वैलिड है, वो मैंने स्टार्ट में बोल दिया कि वो हमेशा चेक करना है, बट इतनी कहानी करवाने के बाद वो इधर नहीं लेके आए, दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम. सो दैट्स व्हाई अगर इतनी कहानी करवा रहा है ना, तो फिर क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ना, बाकी सब सॉल्व करके फिर वापस आना. ठीक है, बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा कैलकुलेशन. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज इंश्योरिंग दैट, जस्ट इंश्योर दैट इट इज ग्रेटर देन, है ना, ये मैंने हमेशा बोला. ओके, अदरवाइज वी हैव द रफ वैल्यू, है ना. 10 to minus 7 आए तो 6.79 बोल देते थे, 10 to minus 8 आए तो 6.98 बोल देते थे, ना. That was the point. Okay, now we are talking about here cationic hydrolysis, so that will make the solution acidic, pH less than half pKw. At 25 degrees C, it will become less than 7. Clear है? Now if I have to do the calculation again similar way, case 3 है, this is nothing but case 3 क्योंकि we have got a weak acid. This is nothing but case 3. और केस 3 का कैलकुलेशन कैसा होता था, वी वर चेकिंग अंडर रूट K अपॉन C, है ना. एंड इफ आई एम गेटिंग दैट एज 0.1 से लेस, तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट. आई विल जस्ट शो यू कि कैसे करना है. ओके, तो सी cationic hydrolysis अगेन सेम इक्वेशन, यहाँ पर सिर्फ K ऑफ B प्लस का मतलब है KW अपॉन KB ऑफ द कंजुगेट बेस. तो नॉर्मली दिस वैल्यू विल बी गिवन, ये नहीं देते. ठीक है, तो इफ यू हैव गॉट दिस KB का वैल्यू ऑफ BOH, we can write out this whole thing. We have got this equation, and after that we are knowing that कि ये assumption check करो, अगर ये valid होता है तो H का वैल्यू डायरेक्टली इतना हो जाएगा, H plus which is the product which is CH will become this much, and that will give you this one. And वहां से solution जो आता है, याद रखने का क्या तरीका है, last time we were having 7 plus because we were expecting a basic solution, so we were getting 7 plus half pK plus log C. This time we'll be getting 7 minus half pKb plus log C. That's the formula we are getting here, है ना. तो इतने से ही याद हो जाएगा. अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स ना, तो वी हैव केस 3 एंड केस 4. वी आर नोइंग दैट कि हाउ टू हैंडल दोस केसेस, है ना. एंड दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू 10-15 केसेस, दे विल जस्ट गिव यू वन क्वेश्चन ना, तो उसमें हमेशा केस 3 या 4 अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव गॉट द बेसिक्स राइट. बेसिक राइट नहीं रहेगा तो फिर रट्टा मारो. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग केस 3 एंड 4, देन रट्टा मारो कि ये फॉर्मूला था और इस पे आंसर आएगा. अदरवाइज इफ यू हैव गॉट योर बेसिक्स राइट, तो लाइक जैसे मैंने बोला, अगर ये ग्रेटर देन 0.1 आ गया, तो नाउ वी नीड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक मिलते ही स्मॉल h मिल जाएगा, तो h प्लस वाज नथिंग बट CH, और वहां से फिर pH निकाल देंगे. जस्ट विल इंश्योर दैट कि इट शुड बी ग्रेटर देन 10⁻⁶, है ना. इज इट ओके? नाउ लेट्स गो टू द लास्ट केस where cation as well as anion will be undergoing the hydrolysis. Now in that case they'll be reacting with each other actually, or they'll be part of the same reaction. Why it is happening? अगर मान लो मैंने इन दोनों का अलग अलग रिएक्शन लिखा होता ना, एंड इफ मान लो लाइक एक क्वेश्चन आता है कि कैटायन का एसिडिक स्ट्रेंथ और अनायन का बेसिक स्ट्रेंथ सेम हो, ये जरूरी तो नहीं है ना, बट व्हाई वी आर कंसीडरिंग इक्वल कंजम्पशन. अगर मैंने ये रिएक्शन लिखा, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ B प्लस एंड A माइनस इज आइडेंटिकल, सो वी विल बी अज्यूमिंग इक्वल कंजम्पशन ना. But how can we say that they are having equal strength? मान लो Ka value of Ha is different from Kb of BOH, then what will happen? तो एक लाइन मैंने कोएफिशिएंट सेम है ना. वो तो मैंने लिख दिया ना, जरूरी थोड़ी है कि वो साथ में ऐसा करेंगे.
हो सकता था ये जो पिछले 2 रिएक्शंस लिखे दोनों अलग अलग हो। अभी जो मैंने कैटायन की हाइड्रोलिसिस अलग से करवाई थी, दैट वाज हैविंग वन रिएक्शन, वेयर इज दैट? सो लाइक मैं एक रिएक्शन ये लिखता, A minus plus H2O giving HA plus OH minus. I can write another reaction which is B plus plus H2O giving BOH plus H plus. ऐसा भी तो लिख सकता था ना? Why I'm writing this together? Just for the sake of discussion, I can write na कि B plus giving या B plus plus H2O giving BOH plus H plus, and I can write A minus plus H2O giving HA plus OH minus, और फिर दोनों का अपना अपना एक्सटेंट होता। Why am I not considering that? So the degree of hydrolysis of each, like either one will be equal, right? Because Why it will both be? are getting, because they're from the same compound, right? So it has to be equal, right? We can have acetate ion with NH4 plus. We can have formate ion with NH4 plus. So if I am talking about ammonium formate and ammonium acid, तो अमोनियम फॉर्मेट में भी यू आर सेइंग कि दोनों का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन एनायन विल बी इक्वल। अमोनियम एसीटेट में भी यू आर सेइंग कैटायन एनायन का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इक्वल। व्हाई वी आर कंसीडरिंग? अलग अलग मान के देखो ना, अपने आप समझ में आएगा। मान लो अलग अलग हुआ, व्हाट विल हैपन? मान लो इसका 0.5 मोल हैज गॉन इनटू हाइड्रोलिसिस और इसका 0.3 गया, व्हाट विल हैपन? ये 0.5 बनेगा, ये 0.5 बनेगा, ये 0.3 बनेगा, ये 0.3 बनेगा। विल दे नॉट रिएक्ट अगेन? रिएक्ट कर करके सेम ही हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। फाइनली सेम हो जाएगा ना, because whenever you will get that a stronger acid in presence with weaker conjugate base of weaker acid, they are going to react na? And that's why we are saying degree of hydrolysis of cation and anion is considered to be same in presence of each other. Individually they can have different degree of hydrolysis, but in presence of each other they'll get equal degree of hydrolysis. Is it okay? एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक नहीं पूछा है, बट दे में आस्क यू। रट्टा मारा हुआ है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बात नहीं समझ में आएगी। सो दे दे विल हैव इंडिपेंडेंटली, दे कैन हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। लाइक प्रिशा, यू डिडंट अंडरस्टैंड ना? मान लो आई एम हैविंग NH4Cl का सॉल्यूशन, NH4 प्लस का कुछ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आएगा, ठीक है? यू Yes. कैन हैव सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन, एसीटेट आयन का कुछ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आएगा, and I am saying it is not necessary that both of them will have same degree of hydrolysis. But if I am taking ammonium acetate, if I am taking ammonium acetate, and if I say this is the source of NH3 and H plus, and if I am having acetate ion, which is giving you acetic acid plus OH minus, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन चलो इसको HCO माइनस कर देता हूँ मैं। एक्चुअली क्या होता है ना, NH3 और CH3COH का ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है के भी, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेट्स से आई एम टेकिंग HCO माइनस, दिस विल क्रिएट HCOH। ओके, नाउ इफ आई से इसका K ज्यादा है इसके KB से, विच इज द केस, राइट केस। तो नाउ इसका K ज्यादा है, मान लो इसका 0.5 जाता है, तो ये 0.5 और ये 0.5 बन रहा है। Now we have got इसका मान लो 0.3 जाता है, तो this will be 0.3 and 0.3. Will they not react? What will react with what? So what will react with what in this? I am having these species ना, this some A minus 0.5 ये बचा हुआ है, ये A minus 0.3 बचा हुआ है, ये 0.3 है, ये 0.3 है, ये 0.5 है, 0.5।
Now, if I ask you, will they survive together with these quantities or something will react with another thing? That's my question. So they will react. They will react now. What will react? H They plus means and what? OH minus. H plus and OH minus itself will react now. Yes. Okay. First thing. Second thing is, if I have got the combination of a stronger acid with conjugate base of weaker acid. What is stronger acid? If I say, इसी में से ढूंढ लो. If I have got some extra, like this has got extra na. Yes. This has got extra amount na, क्योंकि A minus 0.3 will be more than A minus 0.5. Yes. So this was extra. If I consider it to be conjugate base of HCOH. Okay. Yeah. Now I have got NH4 plus in front of it. Yes. It will react ना. Yeah. ये तो छोड़ेगा नहीं ना. जब भी ऐसा combination कुछ आएगा, any combination which is having extra H plus or OH minus or extra stronger acid in presence of conjugate base of weaker acid, they will react na. Is it okay? Clear hai? And that's Yes, why sir. ultimately they are going to react with each other to ensure that the equal amount of these ions will be consumed in the reaction. Is it okay? Yes. Clear hai? No. So now whenever I'm doing that, I'll write if it was C, 0 and 0. It will become C into 1 minus H at equilibrium. This will become C into 1 minus H at equilibrium. This will be CH and CH. This was before hydrolysis. And this is after, yeah, at equilibrium. Is it okay? Now, at equilibrium, we'll write K equals Q. Now, for this reaction, KH ka value will not be KW by K or KW by KB. We have to calculate that also. So now, if I have to calculate कि इस reaction का equilibrium constant क्या हो, can I write at equilibrium? It is nothing but BOH into HA upon B plus into A minus. We can write now. I'm just readjusting it. I'll be writing BOH upon B plus into OH minus. I'll be writing HA upon H plus into A minus. And I'll be writing H plus into OH minus. That means I have multiplied it by H plus OH minus and I have divided it by H plus OH minus. Is it okay? Now, if you see the whole thing, H plus into OH minus, this has become KW. If you see this term, this is the inverse of KB of BOH. No? Because KB of BOH will be B plus into OH minus by BOH. So we can say this is nothing but KB of BOH in denominator. And similarly, this is inverse of K of HA. No? And that's why it is equal to Ka of HA in denominator. And that's why KH of this reaction will be this much. Is it okay? After that, the equation is very clear. Simple है, but यहाँ पर एक important point बनता है. अभी तक मैंने कहा था अगर assumptions valid नहीं होते हैं ना, तो we get a quadratic equation. यहाँ ऐसा नहीं है, and that's why sometimes they'll be asking you degree of hydrolysis also in this case. Just see the calculation. So just see the calculation. If I am having this calculation, already we have got this part. Now I am writing CH into CH by C into 1 minus H into C into 1 minus H, and that is giving you this expression, which is not a quadratic, which is a linear equation. And that's why sometimes they'll be asking you H ka value. If you simplify it, ये याद रखना है तो यही याद रख लो, otherwise you can simplify it and you will be getting this value. And root kh का value itself will tell you whether to ignore it in comparison to 1 or not, है ना. Root kh अगर 0.1 से कम आ गया तो we can ignore it in comparison to 1. If it is coming more than 0.1,
then we can't ignore it. So that was the point, first thing. Second thing is, if I want to calculate H plus, I can use any equilibrium, like H plus into A minus by HA is giving you K. So H plus is becoming HA into K by A minus, and that is giving you HA was CH and A minus is C into 1 minus H. The good part is, we have already got the value of H upon 1 minus H without any assumption. देखो यहाँ if but कहीं लिखा ही नहीं. So I'm giving you the result of this section without any assumption. And that's why यहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा है ना, पिछली बार जो फॉर्मूला सब डिराइव किया था ना, that was under some assumption. If this greater less than equal to 0.1, then this will be the formula. Otherwise, we had to solve the quadratic equation. In this case, without assumption, these formulas are valid. So यहाँ देखो h upon 1 minus h जैसे ही आया, we'll put that root kh in place of that. And we have got the root kh का value. So after all, it is giving you the, at the end, it is giving you the h plus का value. And from that, you'll be getting pH का value as, जो दिख रहा है, this is nothing but pH का value is 7 plus half into pK of the acid जिससे anion आया है minus pKb of the base जिससे cation आया है. Is it okay? That is at 25 degrees. Otherwise 7 की जगह half pKb. Is it okay? Sir, I wanted to confirm something about this case. Yeah. So, the degree of hydrolysis of the acid and base are different if they are taken separately, but they are same if they're taken if they're taken together, because whatever because extra will be formed ना, मान लो H will plus react. extra बन गया तो वो बेस के साथ रिएक्ट कर लेगा. हाँ, yes, okay, yeah. H minus extra form हुआ तो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा. So it will get equalized, yeah. So it will be equalized. Okay, now after doing all these things, ना, the problem will be at the basic itself. I told you कि language में फंसते हैं अपने अपन को. So how to get कि ये इस section का केस आया और इस section का question आया है. They will be giving you the question in two manners. In fact, three manners. पहला, they'll ask you कि aqueous solution of CS3CONA will have how much pH if it is having concentration 0.1. Like what will the pH of 0.1 m aqueous solution of CS3COONA? They have given you the salt, है ना? Salt का नाम दे दिया है. Now we have got कि salt hydrolysis का केस है, उसमें से देख लेंगे चारों में से कौन सा केस आ रहा है. That is first way of giving you this question. Second way is, they'll be giving you an acidic solution and a basic solution. और उसमें एसिड और बेस का जब देखोगे ना, तो they'll be having stoichiometric proportion. तो डेफिनेटली क्या होगा, एसिड एंड बेस मिलके क्या बना देगा, इट विल फॉर्म द सॉल्ट. एंड बिकॉज दे आर इन स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन, none of the acid or base will be remaining after the reaction, है ना. तो again you have got the acid salt का solution. It is second way. Third way is, they'll say कि एक acid का solution है and I have started titrating it because I have covered the volumetric में, इसलिए मैं mention कर रहा हूँ इसको. So if they give you कि acid का एक solution है 0.1 m CS3COH solution है and it is being titrated with NaOH, what will be the pH at equivalence? तो at equivalence point क्या होगा, acid will be completely consumed in reaction with base and you will be having salt only, है ना. Is it okay? So these are the three ways by which they can ask you the question of salt hydrolysis. तो यहाँ मैंने दो दिया है, but तीनों points मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे. How to identify कि ये question salt hydrolysis का आया है. First is, when salt is dissolved in water and they'll give you the detail of this salt का amount with along with the volume of the solution. Second तरीका है, you are mixing the acid and base का solution or you are adding acid and base simultaneously in water and you are ensuring that they are added in stoichiometric proportion of their mass. That is another way. Third way is ऋषा वॉल्यूमेट्रिक कर रहे हैं ना हम लोग. टेट्रेशन कैसे नहीं समझ रहे हो? टेट्रेशन का मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग बताऊंगा मैं. आई एम हैविंग अ सॉल्यूशन, लाइक एसिड का सॉल्यूशन है, आई विल स्टार्ट एडिंग बेस का सॉल्यूशन इन ड्रॉप वाइज. ठीक है. और धीरे धीरे वो क्या होगा, सॉल्यूशन का पीएच चेंज होगा. जैसे ही रिएक्शन में कंप्लीशन हो जाएगा, विल गेट एन इंडिकेशन फ्रॉम इंडिकेटर, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे. बट समहाउ विल बी कंप्लीटिंग द रिएक्शन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टाइट्रेशन. इज इट ओके? टाइट्रेशन का मतलब है, one thing will be given in the form of its solution. If solution is not given, we prepare the solution in lab.
And then like I've given you acetic acid, and I'll start adding NaOH का solution in drop wise manner, and I'll observe a few things, है ना. वो कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे, like indicator का use कैसे करते हैं, how it will uh, act appropriately, वो सब काम करेंगे आगे. But titration का meaning समझ में आया ना, simple. Is it okay? चलो. So now तीसरा केस जो मैंने बोला, an acidic solution is titrated by a basic solution or a basic solution is being titrated by acidic solution. Is titrated by an acidic solution. But कहां तक? Till equivalence point. Then you will be getting salt का solution only, है ना, because acid base का equivalence point पे दोनों खत्म हो जाएंगे, they will be forming salt only and you will have pH of the solution, है ना. Is it okay up to this point? Now let's do some questions. Okay, solve this.
डन क्या? सो हाँ जी, सो आपने के और के बी के वैल्यूज दिए नहीं है ना, मतलब अच्छा नहीं दिखा है, 1 मिनट राइट. Ka of CS3COH, I am just rounding it off. Or Kb of NH4OH is 2 into 10 raised to minus 5. Ka of HCOH is 2 into 10 raised to minus 4. Okay. Krisha, 1.9 doesn't look right. Yeah, Geet, I think you're right, or you're close to the right option. I don't remember exact, but I think that is the right range of the answer. No, Chris, your answer is not right, not possible in fact. If I've got anionic hydrolysis, the solution will become basic. Now, how can you have pH less than 7? Krisha and Chris, you have both got value less than 7, which is not right, definitely. See, first के one में, first thing which will do na, पहली बात तो we have been given the salt, so it is the case of salt hydrolysis. What is the type of salt? Its anion is coming from weak acid, cation is coming from strong base. So anionic hydrolysis will happen. First, we'll identify what is the concentration of salt. That is 4.1 is the mass divided by, if you see, this will have molecular mass 82. This is moles, but moles we are not interested. We are interested in concentration, and that's why this will become the concentration. So this will come 0.1. Now, if this is the concentration of salt, what is the concentration of anion in which we are interested in? Always take care of that. Like if I have given you barium acetate na, तो अगर उसका concentration 0.1 है, तो C is not 0.1, it will be double of that. Wherever I have used the term C, it was the concentration of the ion which was undergoing hydrolysis. Okay, and that's why this time one salt is having one anion. That's why it will be 0.1 into 1 only. So that is 0.1, which we are calling as C. Now we'll be checking that condition under root या तो KH by C बोलो या फिर that was KW upon KA into C is equal to 10 raised to minus 14 upon 2 into 10 raised to minus 5 into C is 10 raised to minus 1. So definitely this is less than 0.1. और ऐसा आते ही now we can write pH will be 7 plus, या तो फॉर्मूला याद है तो, अदरवाइज आई गिव यू द मेथड जो डिटेल होगा वो भी करके दिखा दूंगा. सो this I'll call, this is method 1, in which we have directly the formula, which is this much, and that will be 7 plus half. pK if you calculate 4.7 आ जाएगा,
plus log 0.1 will be -1 actually, and that's why if you solve it, you'll be getting 7 plus 3.7 ka half is 1.85. And that's why we'll be getting 8.85 as the answer. If I don't remember this formula, what I say कि ऐसा हुआ, then we say कि OH minus was under root KH into CN, which is under root KW upon KA into C. And that's why we'll write here, this value will be under root 10 raised to minus 14 into 10 raised to minus 1 upon 2 into 10 raised to minus 5. If you solve it, we are getting under root, if I say 5 times, then it becomes 10 raised to minus 11, I think. Is it okay? Now, after getting this part, we can calculate H plus. This is method 2. या फिर यहीं से POH निकाल लो, है ना? So POH, if you calculate here, that will be coming half times 11 minus log 5, which is half times, this will be 10.3. This has become 5.15. And that's why pH, if you want to calculate, we'll say pH is 14 minus 5.15, which is 8.85. That is another way. Ha, Harsh. So the pH is coming less than 10 raised to minus 6, right? So what we have to do the water thing? Is it less than 10 raised to minus 6? I can write it as under root 50 into 10 raised to minus 6. Ten raised to minus 11 is 10 into 10 raised to minus 12. No? So this is greater than 10 raised to minus 6. है ना? और वैसे भी कैसे पता चलेगा ये गड़बड़ नहीं किया है? If your pH is not coming in between 6 and 8. Acidic solution में if it is not coming in between 6 and 7, then it is okay. वैसे ही basic solution में if it is coming more than 8, then also it's okay. It is coming 8.85 ना, तो assumptions are valid. ठीक है? अगर वो 7-8 के बीच में आने लगता तो मैं कहता कि यहाँ गड़बड़ होता है. ठीक है? We have not taken the water. Clear ना? So what you do ना, I'll be sharing the remaining questions also. एक बार सबको attempt करके next time आओगे. I'm sharing all the remaining questions from this section. Next case में next class में we'll talk about some more hydrolysis वाला cases. Like I have not talked about any hydrolysis in which the charge of the ion is +2 or -2 or +3 or -3. है ना? मैंने बहुत smartly तुमको वही सारे दिए ना जहाँ -1 and +1 charge was there. Acetate ion, formate ion, है ना? NH4 plus. I have not talked about anything like sulfide ion, carbonate ion, or even then I have not talked about any amphiprotic ion. तो उनकी हाइड्रोलिसिस का भी केस पढ़ेंगे. बट आई हैव शेयर्ड यहाँ पे बचा हुआ 4-5 क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिया है. आई विल बी शेयरिंग दिस PDF and try these questions, and then we next day we'll cover the remaining part of the hydrolysis, and then we'll enter into something called buffer solution. Very important, बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है. I cannot give you guarantee कि उससे पूछता ही है, बट इट इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक जो यहाँ भी यूज होगा, आगे फ्यूचर में भी. ठीक है, चलो क्लोज करते हैं ना. ओके, बाय एवरीवन. Bye, Shatan. Thank you, sir. Bye, sir. सर क्या गीत? सर एक्चुअली मुझे थोड़ा सा बात करना था. पेस में ना अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह चल रहा है, मतलब आगे के टॉपिक्स चल रहे हैं फिजिकल में. तो मतलब मैं कैसे मैनेज करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है. मतलब आप क्या दोनों ट्रैक कवर करने की कोशिश मत करो. इफ यू आर स्टिकिंग टू माय लेक्चर ना, वेट फॉर सम टाइम. आफ्टर दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू एंटर इनटू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, सर बिकॉज़ अभी एमटी भी है ना 1 महीने में, तो फिर से आई नो दैट, बट द प्रॉब्लम इज ना कि दोनों तरफ भागोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे. हाँ हाँ ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग कि वॉल्यूमेट्रिक अपना 1 लेक्चर और बचेगा, 1 से 2 लेक्चर में खत्म होगा. ठीक है, ये आयनिक विल टेक आई थिंक 2-3 लेक्चर्स. या whatever is covered first ना, तो उसके ठीक बाद हम लोग will start the electrochemistry. ठीक है, ओके सर, ओके. that's one. Second part is again I'm telling you
electrochemistry will have concepts involved from volumetric as well as ionic. Yeah. If you don't understand this section, तो उधर दिक्कत होती है. That's why I'm हाँ. telling. We'll go by sequence. हाँ, जितना क्लास में समझ में आ रहा है, that's okay. क्लास में put your best effort. Whenever you are appearing in the class ना, वहाँ पर put your best effort. फिर उसके बाद का कहानी जो पेंडिंग रह जाएगा ना, definitely I am going to make you understand. ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. Okay. Bye. Thank you, sir. Yeah. Sir? Sir?